Hello my dear student, how are you? Good morning to one and all. Dear student, today in this video we learn the continuity and differentiability. So we are starting here new unit and its first chapter. That unit is the calculus, and for calculus we are taking the first chapter, that is very important. And this is continuation of whatever you have learned in the class 11, that is the chapter of the limit and differentiation. So next, continuity and differentiability. Here we see what is the meaning of this and how we can define it, and what is the relationship between the continuity and differentiability of a function. So let's see. We start. So first of all, we see the introduction of the chapter continuity and differentiability. What is the idea of this? So we can say this chapter is essentially a continuation of our study of differentiation of function in class 11. So you have already learned in class 11, that is the limit and derivative. In the unit of the limit of derivative, we have learned some important results and theorem. So in the continuity of that one, we extend our chapter and we learn here the meaning of the continuity and differentiability of the function. Correct? In the class 11, you have learned also derivative of the some function like polynomial and trigonometric function. 11th क्लास में आपने पॉलिनोमियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं ये सीखा। हालांकि कई बच्चों ने ये नहीं किया, एनुअल एग्जाम में बहुत खराब किया, तो उन बच्चों के लिए ये चैप्टर 50% तो कम चांस हो गए समझ में आने के, बिकॉज दिस इज द कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस क्लास चैप्टर limit and derivative. If you are not aware about the meaning of the limit, what is the limit and how we can find the limit of the function, and basic concept of the derivative, then it is not possible to understand this chapter continuity and differentiability. So my humble request to all of you, please before learning this chapter you go through the previous chapter limit and derivative of class 11, and throughout you have to learn this or practice this, how to find the limit of different function, because this is only extended form of that one. Basic is already we know, and if you are not knowing that one, then you prefer to study first limit and derivative. इस चैप्टर से पहले वो पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात, बुक की रीडिंग लगाइए, उसकी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बुक नहीं है तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाले हुए लिमिट एंड डेरिवेटिव के 11th क्लास के, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है ना। उससे देखने से आपको आइडिया आ जाएगा कि लिमिट क्या है। हम आगे की बात बताएंगे, ठीक है ना। देन इन दिस चैप्टर वी लर्न पार्ट, दैट इज वी सी देयर इंट्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी क्या है, कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, एंड डिफरेंशिएबिलिटी किसको कहते हैं। वहां डेरिवेटिव हमने पढ़ा था, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव। नाउ वी सी आइदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। सो प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल इज नोन एज डिफरेंशिएबिलिटी। सो दैट वी हैव टू सी इन दिस चैप्टर। Also we see the important concept of this and relationship between the continuity and differentiability of the function. Also we learn differentiation of the inverse trigonometric function. जैसे 11th क्लास में आपने डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पढ़ा है, अभी हमने चैप्टर 2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है। So how to find the derivative of the inverse trigonometric function, that we have to also see. Also we find the derivative of the function in parametric form, and we learn here what is the meaning of the explicit function
and their derivative. Also, we introduce in this chapter two more important function, that is the exponential and logarithmic function, जो कि आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है. मोरेवर वी आल्सो लर्न how to find the derivative of the logarithmic as well as the exponential function, and the logarithmic differentiation is also there, which is very helpful technique to find the derivative of complicated function. जो complex form में function दे रखा है उनका derivative निकालने के लिए हम एक technique use करते हैं. That also we learned in this chapter. Also we learned here how to find the second order derivative. जैसे अभी तक हम लोग 11 में जो डेरिवेटिव निकाला था वो वन टाइम कर रहे थे तो फर्स्ट ऑर्डर कहला था. अब हम 2 बार करेंगे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, दैट इज नोन एज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. और ये आपके जो कैलकुलस है, मैथमेटिक्स 12th क्लास में मैक्सिमम सिलेबस है वो कैलकुलस से आता है. पहले इसमें 55 मार्क्स का आता था आउट ऑफ 80, लेकिन अभी ये टर्म करने से इतने अलग अलग यूनिट कर दिए है, लेकिन 40 मार्क्स का लगभग 50% ऑफ द टोटल मार्क्स विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, दिस यूनिट कैलकुलस. ठीक है, कैलकुलस में 2 पार्ट है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. एंड इन डिफरेंशिएशन वी आर टेकिंग द फर्स्ट यूनिट. डिफरेंशिएशन के यहाँ पर 2 पार्ट है, एक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और दूसरा है इसका एप्लीकेशन. तो ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर अगर आपको डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी आती है देन यू कैन फाइंड द इंटीग्रल आल्सो एंड रिमेनिंग चैप्टर ऑफ द इंटीग्रल आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड. सो इट इज वेरी एसेंशियल दैट यू हैव टू attend the class regularly or learn the regular knowledge. Clear? So first of all we take the basic idea of the continuity. What we mean by the continuity of a function. So to feel the meaning of this or to learn the definition of the continuity of a function, we take some examples. With the help of example, we get the idea, or with the illustration, we get the better idea of the continuity. So first of all, first function example we take the function f(x) is defined as 1 if x is less than equal to 0 and it is 2 if x greater than 0. यहाँ पर हमने एक फंक्शन f(x) ले लिया है जिसकी वैल्यू 2 तरह से हो सकती है, 2 वैल्यू हो सकती है. f(x) equal to 1 if the x is less than equal to 0 and f(x) equal to 2 if x greater than 0. Clear? So this function is of course defined at every point of the domain of definition. So first thing is there that to be remembered very carefully. Whenever you are finding the continuity of any function or derivative of any function, it should be clear that function should be defined in the domain of the definition. जिस x को हम लेंगे उसके लिए या उसकी हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होना जरूरी है. डिफाइन मीन्स the function should be have unique value at each point of the interval. x की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए. एग्जिस्ट का मतलब उसकी अपनी एक पार्टिकुलर वैल्यू आनी चाहिए. Then we can check, otherwise it is not possible. If function is not defined then we cannot say continuous or not continuous. So we can say this function is also defined at every point because when you take x equal to 0 it is 1, x equal to -1 1, x minus 2 1 and infinity. Similarly when you take greater than 0 x equal to 1 2 3 4 5 6 whatever variable, the function is defined at every point of the domain of the definition.
पहला पॉइंट ये देखना कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। नाउ इफ वी वांट टू सी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हो, x axis and y axis, so you can see here x, when x is less than 0 or equal to, when x is 0, then y or function, this fx, as we see in 11th class, y or it means fx. So when x equal to 0, value of the function is 1. So x equal to 0, y is 1. Similarly, when x equal to minus 1 is the less than 0, then value of the function at minus 1 is 1. So this is again 1, minus 2, 1, minus 3, 1, and so on. So whenever you put the value of x as a 1, value of y is constant, that is 1. Clear? Now when x is greater than 0, but which number is greater than 0? Just after 0 we cannot say. ये हमने 11th class की लिमिट में पढ़ा था. We cannot find the number which is just after 0. It may be 0.000001 or like this. So we are not confirmed. That's why suppose we take x equal to 0.1, then we say 2, y is 2, but here value is not given for 0. So we can say x equal to 1, y 1, 2, x 2, y 2, x 3, y 3, and so on. So this is the graph. So very interesting thing, dear student, to find here that when we are on the left side of this coordinate system, the value of the function is 1, and that is a constant. If you are changing the value of x, but there is no change of y, on the left side only I am talking. Similarly, when you move right side of the y-axis, when the x is increasing, then corresponding value of y is not increasing. ठीक है ना, ये कांस्टेंट है. But you can see that for all point, the nearby point of any particular point you can take, the function is defined and it is equal. So one can deduce from the graph that the value of the function at nearby point on x-axis remains close to each other except x equal to 0. इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि x के जो पॉइंट्स हैं उसके सबके पास पास में वैल्यू फंक्शन के निकालेंगे तो इक्वल रहेगी, लेकिन 0 पे ऐसा नहीं. जैसे हम कहें कि x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 पे वैल्यू यहाँ रहेगी, -3 की भी यहाँ रहेगी, -4 की यहाँ, तो सबकी वैल्यू फंक्शन की एक ही है 1. इसी तरह 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4. राइट साइड में भी ऐसा ही होगा. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द 0, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 है, लेकिन जैसे 0 से थोड़ा बड़ा लेंगे we get 2, small we get -1, right? So this special type of behavior of the function or graph of this function we have to discuss. So at the points near and to the left of 0, at the point, now whatever you are taking the point near 0 and left side 0, you can take any point, point 1 or point 0.1 or point 0.001. All these are point -2 or -2, -3, value of the function is 1.
and the point near to the right of the zero. All the point of x near to the right, value of the function is remains constant, that is 2. So this is the left hand limit and right hand limit we called in the 11th class. इसी को हमने 11th क्लास में कहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. So meaning of the left hand limit and right hand limit we clear in class 11. The value of a function at a particular point to the left side of this, that is known as left hand limit. Value of the function at the right of the given point we call right hand limit. So in the term of the language of the limit, we can say the left hand limit of this function fx, x tends to 0 minus we call, and that is equal to 1. ये हमने 11th में सर्च किया है. लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x tends to 0. This is the limit. Limit x tends to 0 minus of the function fx equal to 1. Similarly, we call the right hand limit. So limit x tends to 0 plus fx, and that is 2. ये हमने ग्राफिकली मेथड से समझ लिया. दिस इज द डेफिनेशन फॉर द लिमिट. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है, that we have to discuss. In particular, the left and right hand limit do not coincide. Here you can say this left hand limit is not equal to right hand limit. In this case, in this particular, we are saying the left hand limit and right hand limit of the given function at the given point, that is x equal to 0, are not coincide. Also note that when we try to draw the graph of this function, we cannot draw it in one stroke. Suppose we are drawing graph like this, and then we have to lift it or chalk from the pen of the blackboard, and again we put here and then draw. So we cannot draw the graph of this function in one stroke. Okay, one stroke का मतलब हुआ without lifting the pen from the paper. आपको एक बार पेन से को उठाना पड़ेगा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि यहाँ का पॉइंट इक्वल नहीं है. That's why this graph is not continuous. Continuous मतलब लगातार ग्राफ हम पेन को उठाए बिना ड्रॉ नहीं कर सकते. तो बहुत सी सिंपल लैंग्वेज में हम कहें कि कंटिन्यूस का मतलब यही होता है कि लगातार. जैसे आप कोई काम लगातार करते हो तो उसी का मैथमेटिक्स में नाम दिया है कंटिन्यूटी या कंटिन्यूस. तो कंटिन्यूस होना ग्राफ का जरूरी है. वो कब होगा, जब ये नहीं होगा, मींस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड शुड बी इक्वल. पहली बात ये आ गई, क्योंकि ये इक्वल नहीं है. तो अगर इन द लैंग्वेज ऑफ द मैथमेटिक्स वी कैन से इफ लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, then the function is not continuous, or we cannot draw the graph of the function in one stroke. In simple language, right? So we need to lift the pen when we come to the 0. When we around the 0, then it is necessary to lift the pen from the plane of the paper. This is one step of the function being not continuous. तो ये एक एग्जांपल है जहां पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं है. नाउ वी टेक सेकंड एग्जांपल. अब आप एक और एग्जांपल लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ. इफ वी आर कंसीडरिंग सेकंड एग्जांपल, fx equal to 1 if x not equal to 0, and 2 if x equal to
So this is something change there. You can see in both the example there is a basic difference. Here say if x not equal to 0, then the value of the function is 1. It means again you can say the given function is defined in the definition of the domain of the function for every real number or whatever x is there. If x is a real, then we can say it is defined for all real values. Clear? देखिए, and x equal to 0 equal to 2. So if we want to draw the graph of this function, taking x axis and y axis. So here when x equal to 0, value of y is 2. So suppose this is x is 0, then y is 2. So this point is already given. तो यही यहाँ बेसिक डिफरेंस है. यहाँ x इक्वल टू 0 था, फंक्शन की वैल्यू 1 थी. यहाँ x इक्वल टू 0, then function is 2. Also when x not equal to 0 means when x less than 0, function is 1. So all these conditions, when x is less than 0, we have value of the function is 1. So we can say when x equal to -1, but 1 is not given here. When 0, when x equal to 0, y is 2. But when x less than 0 means -0.01 or -0.00001 and so on. So in that case we make a blank circle and value of this function is y equal to 1. Clear? Now also when you take x positive number but not equal to 0, x आप positive number लेते हो लेकिन x 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 से बड़ा 0.00001 like this. Exact number is not there, we take approximately like x 1 or 2 or 3, 0.1 then 2, this is 3, 1, this is 1, so we get, so y is again 1. So here we can observe the graph of this function when x less than 0 or greater than 0, value of y is fixed, that is 1. x की वैल्यू अगर आप 0 से छोटी लोगे तो भी 1 आएगा, 0 से बड़ी लोगे तो भी 1 आएगा. लेकिन x अगर आपने 0 लिया then value of function is different, which is 2. So again dear student, you can see or observe that the graph of this function cannot be complete or drawn without lifting the pen from the plane of the paper or chalk from the blackboard. We cannot draw the graph in one stroke. ऐसे नहीं कि हम लोग ऐसे graph draw करते हैं in one stroke. Because when we are drawing the graph and we come across this, value of x equal to 0 is not 1, then you have to move at 2. After this floating point and make empty circle, again we draw this graph. So in both the examples we learn the graph of these function is not drawn with one stroke or continuous we cannot draw. That's why this function is not a continuous function. तो continuous function वही होगा जहां पर ग्राफ आप एक ही स्ट्रोक में ड्रॉ कर लीजिए. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, like in the 11th class we draw the graph of the sine function or cosine function in one stroke. मैंने यहां से स्टार्ट किया and so that is in one. So that is a continuous function. Clear? So here mathematically we see that a function is a continuous at a fixed point if we can draw the graph of the function around that point without lifting the pen from the plane of the pen. अगर सिंपल सी लैंग्वेज में हम कहें कि फंक्शन कंटिन्यूस क्या होगा,
आपकी लैंग्वेज में क्या है या आम बोलचाल की भाषा में कहते फंक्शन क्या होगा, अगर आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन को उठाए ड्रॉ कर देते हो, दैट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन. क्लियर? But when we give the definition, here also you can see left hand limit and right hand limit. So left hand limit x tends to 0 minus of fx, and that is 1. And right hand limit, that is limit x tends to 0 plus fx, that is also 1. Here left hand limit equal to right hand limit. But one more thing we have to need, value of the function at that point is 2. In the previous example, we have to find that left hand limit is 1, right hand limit is 2, and value of the function at that point. So these two important points we have to discuss. लिमिट के बारे में मैंने कहा था आप लोगों को 11th में पढ़ना है, पढ़ा नहीं है तो वापस आपको रिवीजन कर लेना, ठीक है ना. तो लिमिट में हम लोग दो चीजें यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं. इन 11th क्लास we see or we give the definition that limit of a function at a particular point is defined if the left hand limit and right hand limit are equal. लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी किसी फंक्शन की, यदि उसका लेफ्ट और राइट दोनों ही एक हो जाए तो लिमिट. Now, if in the first example we say left hand and right hand limit are not equal, so limit does not exist. It means this is the basic reason why the function is not continuous. If you see in the language of the mathematics, the limit does not exist, means function is not continuous. जिस function की limit exist नहीं करेगी, the function will not a continuous function. और देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द कंटिन्यूटी. तो आपको लिमिट आना चाहिए. अगर एक फंक्शन की दोनों ही लिमिट इक्वल है, मींस लिमिट एग्जिस्ट करती है, देन वी कैन से इट मे बी कंटिन्यूस. इफ नॉट एग्जिस्ट वी कैन से फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस. श्योर वी आर. नाउ सेकंड एग्जांपल व्हाट एक्सप्लेन. हियर इन सेकंड एग्जांपल वी सी लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1, राइट हैंड लिमिट इज आल्सो 1. So by the 11th class definition, we can say left hand limit and right hand limit, then limit at 0 it exists. तो ये हमने डेफिनेशन 11th में पढ़ा है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी. अब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब क्या, दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस और नॉट, दैट वी हैव टू सी. अब ये हमारा क्वेश्चन और उठ रहा है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं. हियर से वी कैन से दिस अगेन डेफिनेशन से वी हैव टू हियर लिफ्टेड पेन एट लीस्ट वन टाइम. सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस. सो इवन इफ लिमिट इज एग्जिस्ट then also it is not continuous. Then what a factor is there? Other factor, that is value of the function should be coincide with the limit. तो हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, if limit exists then that should be always equal to value of the function. So important point we have to discuss. To be function continuous, it is necessary that their limit should exist and value of the limit that will be equal to the value of the function at that point. तो इसकी एक डेफिनेशन लिख लीजिए. तो ये दो एग्जांपल से हम क्या ट्राई किया, रिजल्ट दैट वी हैव टू राइट बाय द डेफिनेशन. सपोज f is a real, we suppose f is a real function. Real function in 11th class we see definition. A function is called a real if its domain and rank both are real function on a subset of the real. Subset of the
real, or it may be real number also, or subset of the real numbers, and that C be any point in the definition of the f. In the definition of function f, then f will be continuous, that f is continuous at c. If now what is the condition? Limit x tends to c fx, there should be value of the function at that point. This is very important. So we can say here that function is a continuous, then very necessary condition is that the limit value and function value both are. अब इसको सिंपल सी लैंग्वेज में हम दें कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब उस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों एक जैसी होती है. वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट कोइंसाइड और सेम और इक्वल, वी कैन से फंक्शन इज ए कंटिन्यू. अब इसको और बहुत सारे तरीके से आप मोर इलेबोरेटली यू कैन ड्रॉ. इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कब करेंगी? इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. So this may be replaced as left hand limit and if left hand limit value, right hand limit value and value of the function, then it is continuous function. तो दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन इसको थोड़ा हमने बड़े रूप में लिख दिया. Then also the function is, so we recall that in 11th class C, the limit will exist if the left hand limit and right hand limit of the function is. So as we may also refer to the definition of the continuous function, in other words you can say a function f is continuous. Function f is continuous at x equal to c. We have three conditions. That first one is the left hand limit of the function at the point x equal to c, right hand limit at the point x equal to c, and value of the function at the point c. All are equal. Then we can say function is a continuous. So you may use this definition or you may use this definition. Both are same meaning and both are correct. And if as you see in the both example, जैसा कि हम लोगों ने देखा दोनों example में, in first example we are observing that left hand limit and right hand limit is not equal. So this is not satisfied in first. Function is not continuous, and if function is not continuous, we can say the function is a discontinuous. And at what point it is not continuous? That point is known as point of discontinuity. What is the meaning of the point of discontinuity? The point at which the function is not continuous. So in example first, the point of discontinuity is 0. In second also the point of discontinuity is 0, but there is a left hand limit equal to right hand limit, but value of the function is not same. So in this way we can define the continuity of the function in definition from first the standard definition you can write this one, or second we can give the definition of the left hand limit and right hand limit. So this is all about today's class. Thanks for watching. Have a nice day.